अरे बेवकूफ गुस्से में मेरे नाम पे आगे साइन कर दिया। ठीक है ना साइन हो रहा है बस मैं नहीं वो तो गुस्से में साइन कर दिया। बट अरे सर पीछे जाना नहीं काफी नहीं लिखा आता यार सुपर स्क्रीन पानी की बोतल अरे तो पी भी तो दे मैं आता हूँ अरे यार नहीं पूरा टेंशन करी सबका साइन करना तू भी जा रहा है नहीं भाई सारी गलत है यार नाम साइन चिल्ला भाई लेकिन 2 मिनट मेरे को एक नहीं 4-5 पकड़ रही बोतल को खोलो मेरे पास एक ही टेक्स्ट तू ऐसे किताबों को पढ़ेगा ना पास हो जाएगा अरे हाँ क्योंकि उधर वो लोगों ने कितना भाई हम तो वीडियो बनाने का वायरल भी रह अरे वो बात कर रहे हैं आपकी मोबाइल कॉल अरे इनकी लड़ाई बड़ी चली नहीं पुलिस के तरह आगे भाई को आगे मम्मी के साथ टेलर के साथ खड़ा था हां मैं बात कर रहा हूं आप लोग सेम हां सेम घर में सेम दिल में है हमारी मम्मी भी सेम है वो तो बाबू से पापा में क्या पापा अलग है One mother, three brothers. ब्रदर फ्रॉम द सेम मदर हम तेरे तीन ही भाई तूने मैं भी आ जाऊंगा पे छोटा। इसको मेरे दूसरे की अडॉप्ट करने का ये बेचारा बचेगा इसी घर से। क्यों ऑल्सो इससे ज्यादा बड़ा गुड कितने अमीर हो अडॉप्ट नहीं कर रही भाई साथ में बेटा आ रहा हूं रोटी बनाना आता है छोड़ो छोड़ो नहीं बोला Where did we stop in the last class? Huh? Tom included the mirrors. Tom included with mirrors. Spherical mirrors, we started already. So we started with terms associated with
आपने choose किया था. अच्छा, just we define what is convection concave. हमारा जो लास्ट क्लास हुआ था वो एक ही घंटे का था क्या? Yes. Yes, sir. और We started with वो एक ही, spherical mirror. and that was the only class. Yes. After that, this is the second lecture, right? Right. हमको दो lecture दिए. हाँ? 6 तक आपके का lecture है. Okay, okay, ठीक है. आज दो lecture होंगे तुमको. 2 hours. Okay, so today we will do image formation by spherical mirrors. So we had covered till what is focal length, what is radius of curvature. Huh? All the terms done. And what is the relation between F and R? F is equal to R. That is also covered. That is covered, right? Okay, great. F is equal to R. Okay. So we'll start with image formations. Image formation for spherical mirrors. This is what is the topic for today, image formation for spherical mirrors. So before that, just a quick recap. How many types of images can be formed? Huh? Yes. So types of images are 2. Real and virtual. What's the difference? Many. Real images are inverted and virtual images are inverted. Correct. So real is always inverted and virtual is always erect. What is the other difference? Here can be displayed on the screen. Yeah, virtual cannot be Good. done. So it can be displayed on or obtained on screen. Can be obtained on screen. लिखना है. नहीं ये तो रिवीजन आई थिंक लास्ट क्लास में सब बताया है. And erect जो नहीं प्रेजेंट है लास्ट क्लास में they can quickly jot it down. And virtual का क्या होगा? Can't be obtained Cannot be on. obtained on a screen. Can't be obtained on screen. तो ये तो रियल का नेचर हो गया, ठीक है. बनता कैसे? When real image formation takes place. Real images formed when reflected rays intersect each other, and virtual images are formed where they appear to be. So it is obtained at a point where reflected rays intersect. Reflected rays intersect to form real image. यहाँ पे क्या होगा? Appear to. Where the rays appear to be. When? When it is obtained at a point where the reflected rays appear to be. When? Extended back. When extended backwards. Okay. So these are the key terms that should reflect in your answers, right? So reflected rays, here they actually cut each other, intersect. Okay. But here reflected rays appear to meet. When extended backwards. Okay, so these are real and virtual image characteristics. Now we said reflected rays intersect, so we need just 2 rays, okay, for image formation. So which 2 rays? So everybody put your mobiles on silent, okay? All of you put it on do not disturb mode or silent mode. Okay. So rays to be considered for image formation.
So there are 4 rays, out of which any 2 can be considered for image formation. Okay, so what are those 4 rays? Incident and reflected. Yeah, but how? Let us see. So this is a concave mirror. Okay, so the first ray you will consider is the ray going parallel to the principal axis. So what happens to that ray? It will pass to focus. After reflection, it will pass through focus. Okay. So this you have to know the nature of rays. The ray which is incident to the principal axis, after reflection will always pass through focus. Okay. This you have to remember. Which other ray? And why it is passing through focus? Because what is the normal at this point? What is the normal? Perpendicular. So how to draw perpendicular on a curved surface? If it is a plane surface, you can draw a perpendicular at 90 degree. Right? Huh? So what is a perpendicular on a curved surface? Did I tell you that? Did I discuss regular and irregular reflection? Regular, irregular reflection we have not discussed. Okay. So didn't I say that all the rays incident parallel, the reflected rays also will be parallel? Did we discuss this? If the surface is plane, the incident ray, if they are parallel, the reflected ray is also parallel. And so this is for smooth surface. And for any surface which is irregular, did I not discuss this? No, sir, we discussed. अच्छा ठीक है. So देखो, suppose there is a rough surface, okay? If there is a rough surface, now the incident rays are parallel. Let us say there is some cavity or curve is there. So you have a. Now how the reflection will take place? We need a normal, right? Yes. So where is the normal? See, for this curved surface, you can imagine that it is part of some circle. Okay? So that center of the circle, so from the incident point, you draw normal as the radius. What is the normal to a curved surface? The radius. At any point, just draw the radius to the center. So here, the normal will be this. And radius will pass here, see? Okay? So if a parallel ray, this is the angle of incidence, the angle of reflection can be constructed equal to y by law of reflection. So you'll always find that it will pass through focus. You understand? But this is for the first time I'm telling you, but in all the ray diagrams, you don't have to draw this. You just know that if the ray is parallel to principal axis, after reflection it will pass through focus. So this is ray number 1. Opposite is also true. Yes. What is opposite? If the ray is incident towards focus. It will be parallel to the principal. Correct. So this is the second ray. Okay. So these 2 rays are done. Now I said any point on the mirror when it is joined with C, it becomes normal, right? So if any ray, if it is incident along normal, what happens to it after reflection? Any ray which is incident along normal, let us say a ray is incident along normal. What is the angle of incidence? Something wrong. Lot of turbulence from your side. Yeah? Okay. The incident ray along normal. What's the angle of incidence? It will be on the incident. Yes, it will retrace, right? Why? Because it is directly going. It passed through the center. Yeah. Law of reflection says angle of incidence is angle of reflection. What is angle of incidence? 90 degrees. Are you sure? What is angle of incidence? Normal. So 45. 0 degrees. 0 degree. Yes, my last lecture you didn't attend, right? I don't. You didn't. Okay. Why 0? Because what is angle of incidence? Angle between incident ray and makes sense. Only sense is this. Everything else is nonsense.
Okay. So this is angle of incidence, right? If it is along the normal, what's the angle of incidence? 0, right? So R also should be 0. So when that is possible? When it returns the same path, right? So where is the reflected ray? It will go back. All right. So this is the third ray. Fourth ray you can consider is any ray which is incident at pole. So what happens to that ray? Let us say any ray is incident at pole. कैसा color हो रहा है इसमें? होली खेल रहा है. So any ray incident along the pole will return from after reflection. Where will it go? Where will it go? We'll go back along the same line. Yes, on the other side. So what is principal axis? It is passing through C and P, right? So this also should be normal. Yes. So angle of incidence becomes this now. Okay? And then what happens? The reflected ray will be equal to angle of incidence on the other side of the normal. Correct? So any difficulty in remembering the nature of these 4 rays? This really filled pen till the top. Okay. So these 4 rays you have to remember in the formation of ray diagrams. Shall we proceed now? Yes, sir. Okay. So first we are going to learn image formation for concave mirrors. Okay. So case 1. Concave mirror. And the same is true for the other mirror. What is the other type of mirror? Convex. So here also, any ray which is parallel. Now what happens? So here go F and C, right, somewhere. It will be reflected away from F. There go. If any ray comes parallel, so it will, now in this case, it was after reflection going through focus. But here it can't go to focus, it has to be reflected. So here it will be reflected away from focus. This is what will happen. Okay? What happens here? Reflected away from focus. Why? Now again, what is the normal here? This is the normal. Right? So if this is the normal, then what is angle of incidence? This is angle of incidence. The angle of reflection will be this. Understood, everyone? The normal is what will decide the angle of incidence. So angle of reflection is equal angle on the other side. So you can actually construct, once you measure what is I, construct this, and then you will find that when extended backward it will pass through focus. Okay, so these things you have to keep in mind. Likewise, second ray. What is second ray? If any ray is incident along the focus, like this, okay, here, along the focus, then it will be reflected back. Okay, so if any ray was incident along the focus, let us say this ray. Okay, and after reflection it will be parallel. Alright. Third, obviously if anything is incident along that pole, this is how it will be reflected. And anything is incident along the center of curvature. Here, so anything goes along the center of curvature. What will happen? It will return back. It will return back. So is the nature understood for both mirrors? Anybody who has not understood, please ask. Okay.
So this is as per the previous diagram. This is the first ray. Second ray is along the focus. This is the second ray, and this is its reflected ray. So incident and reflected ray for each ray. Okay, this is reflected of the first. Third was incident along C. So this is the third ray. And fourth was on the principal. So this is fourth ray. Okay. So the name of each ray is the incident ray, and you see how their reflected rays are behaving. So you have to keep this in mind, and you have to take any two rays of this, not all four. Any two rays. Okay. So are you comfortable till here? What four rays? What two rays to be taken from these four rays? Okay. Now see. So the first image formation is when the object is at infinity. Infinity. What does it mean? Object at infinity. Object is very far away from. Yes. Infinity means very far. That is very far away. Okay. Like if you are trying to obtain the image of a sun, have you tried it? Can we obtain an image of a sun? Yes. Yeah, probably. Yes. Don't you reflect to teach some of your friends with a mirror? So basically, sun rays are coming, and those rays are reflected. So basically, the sun rays, when you are reflecting back, they are forming the image of the sun. Okay. So now, so what happens when the object is far away? What you get is only rays parallel. You only get parallel rays because the object is so far away, right? Begin. So first thing you will do in image formation is draw the mirror, mark pole, mark focus, and mark center of curvature. First mark center of curvature, then mark focus at the midpoint. So this is C, this is F. Okay. Yes. So now the parallel rays will be like this. So one ray I am taking as the first ray over there. Ray parallel to principal rays. So the reflected ray will pass through focus. Right? So I said for image formation I require two rays. Yeah. And for object at infinity the only ray that will be incident is parallel ray. So I take one parallel ray below the principal axis. So what about the two rays of the same side? They won't be able to form an image, right? They will How is that? like this. Oh. All of them meet at the same point, focus. So minimum two rays are needed, but you can take more than two rays also. So all of them will form the image at the same point. Okay? So take only two rays. If you take more than two, then two they are going to meet and focus only. Then we have to make 4 rays. Just two. She asked the question, what if there are more than two rays? I said, when two they will meet at focus only. Because as long as the ray is parallel, after reflection it is going to pass through focus. So where are the reflected rays meeting? At focus. Okay. So what is the image position? When the object is at infinity, image is at focus. Image at F, focus. So this you have to know. Like when the object is at infinity, where the image position is. Image position is at focus. Nature of image. Nature is Real and virtual. real and inverted. How can it be real and virtual? Real and inverted. Real and inverted. Okay. And then, what is the size of the image? Small. I- Saying nights are smaller than the actual image. Sun is 35. Sun is so big, right? This is a dot. How big is dot as compared to size of sun?
Very small. Very small. So it will be highly diminished. Okay, it will be highly diminished. Again, is that clear? So I'll erase the upper part. There is a small variation for this. I'll draw it above. So what is the first step to draw the ray diagram? Image. This diagram is called ray diagram. First step is you draw the mirror. Then you will draw the principal axis. This is the first step. After that, you will mark pole, center of curvature, and focus. Don't label it CNF. Label it in the end after drawing the ray diagram because sometimes the rays will cut it. Okay. So label it in the end. How can we measure it precisely? So you can draw it with the help of compass. Yes, sorry. So you will get C because compass impression here, needle impression will be C. See. Then measure it. If it is 4 centimeter, at 2 centimeter you mark. Oh, okay. Okay, so then we would need to label it at the end. Yeah, you label it at the end because when you draw the ray, sometimes it goes above what you have written. Understood. So then you have to rub it and rewrite again. Understood. And you have drawn with the pen, then you can't do it. Then you have to draw the whole diagram all over it. So that's why write it in that. So I said, when the object is at infinity, the rays are parallel. What if the rays are not parallel to principal axis? They are parallel to each other, but not parallel to principal axis. Then what do you do? Then where they are going to meet? So they are parallel to each other. So now there is a The reflected ray will be also parallel to each other. no. How can it be? They will be parallel, but they will be. How can it be parallel? They will make different angles. See, where is the normal now at this point? Here, where is the normal? Is the angle same for all these three rays? No, sir. Okay, so now when you construct the angle, you will find that they are meeting, they will be parallel if this was a plane surface. It is not a plane surface. So diffuse reflection, all the lines will go at different angle because normal will be different for that. Got it? So now where is the reflected ray here? This is I for this. The reflected ray will be somewhere here. For this, there is a different I, say I dash, and this reflected ray will be, So they will meet at some point, right? yeah, they are meeting at some point at, below F. So this is called focal plane. What is it called? Focal plane. Focal plane. So they will actually, so the image is forming at focus only, but below it, any plane perpendicular to passing through F. So this is called focal plane. Got it? This is the only difference. Okay? So it will be highly diminished image at focal plane now in this case. Okay? So this is the only thing that you need to keep in mind. Both are first case when image is at infinity. The image will have the same nature as that. The one Everything same, everything same. Just it won't be at focus. It will be on focus. Yes. Highly Okay. diminished real and inverted. Yes. So the image distance is also same as it is for the case below. So image distance is, the symbol for image distance is V, small v. Okay. All the distances are measured from pole only, right? So any questions here? So now I will go to second image formation. Sir, Yes. move it forward. Yeah, this is the question you shouldn't ask me. Matlab. I say yes, whatever I write on the board, draw everything, but with understanding.
ये है बुक में, तो वो वाला डायग्राम भी है, तुम्हारे वॉल्यूम में भी होगा, देखो है। एनसीईआरटी में है सब जगह होना चाहिए, है ना? सबका सर है, सबका सर कंधे पे है। चलो, सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सर है, सर है, सब सरसरा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। ओके, लेट्स गो। So what is the second case? Object beyond C. तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बियॉन्ड सी मतलब क्या? ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर का फ्रंट साइड है, फ्रंट। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रहते हैं, ओके? सो इसके आगे F है, तो F के आगे C के आगे बियॉन्ड C इज हियर, ठीक है? तुम बोलोगे बियॉन्ड C यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं, मिरर के सामने, तो बियॉन्ड C, मिरर से पहले C आएगा, फिर बियॉन्ड C आएगा। You say beyond C because every distance is measured from pole, okay? So beyond C will be here, ठीक है? So object beyond C, let us see. So this is the first step. First step में क्या करना है? मिरर, उसकी शेडिंग कर दी हमने, और फिर C और F मार्क करके छोड़ो। कौन से दो रे लेंगे हम इस केस में? पहले केस में तो दोनों पैरेलल लेना पड़ा, क्योंकि और कोई रे होता ही नहीं। यहाँ पे क्या लेंगे? एक रे पैरेलल ले लो, ये हमको पता है कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगा। दूसरा तो पैरेलल ही ले सकते हो ना, दूसरा पैरेलल तो हो गया, तो फिर तो यही बन जाएगा। तो फिर दूसरा F से पास अगर दूसरा भी पैरेलल हो गया तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चला गया? इंफिनिटी। हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, रे ऐसी बना दी। देखो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? बियॉन्ड सी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB। हमको कोई दो रे चाहिए। अभी देखो ऑब्जेक्ट से ना इनफाइनाइट रेस निकल रहे हैं और हर जगह से निकल रहे हैं, तो टॉप से हम केवल दो रे लेंगे, टॉप से, ठीक है? तो एक रे हम यहाँ से ले रहे हैं, you can take it along F. Yes. ये डायग्राम वॉल्यूम में नहीं है। कौन सा डायग्राम? देखो ढूंढो वॉल्यूम। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, वो देखो। मिला? 22 to 24 पे सारे डायग्राम। So देखो, you can take any two rays I said, where the reflected rays are meeting. Here. The image is formed here. The second ray went through focus and then reflected. Yes. Opposite. पहले parallel लिया तो focus से गया, दूसरा focus से लिया तो parallel आया. So now this is A dash and B dash. ये image हो गया तुम्हारा. So now you label C and F. अभी C and F लिख दो। तो कहाँ पे बना इमेज? beyond F. Between C and F. Beyond F is everything. C and beyond भी, यहाँ पे भी beyond F है. But this is between F and C and F. So image between C and F. हमको क्या लिखना है? तीन चीज लिखना है, इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज। सो वेयर इज इमेज फॉर्म बिटवीन C and F? कैसा इमेज है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? Inverted real. Real and inverted. Why real? Because these two reflected rays are actually intersecting. Where are they intersecting? This point. Where is this point? Draw a perpendicular.
So between C and F, ठीक है? So what is the nature? Real and inverted. What about size of image? Same as the object. Same as the Is it really same? Look at it. Smaller than the. So diminished. So it is not highly diminished, but now diminished. So once you understand it, it's very simple. Just drawing of freehand ray diagrams. कुछ नहीं. And इस पे एक क्वेश्चन आता ही है. Draw a ray diagram. कोई एक केस दे देगा ऑब्जेक्ट का. ऑब्जेक्ट का पोजीशन देगा. फिर तुमको इमेज का पोजीशन, उसका नेचर और उसका साइज रे डायग्राम बना के दिखाना. ठीक. थर्ड केस में अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मिरर के पास आते जा रहा है. पहले इंफिनिटी पे था, then it came beyond C. Now object at C. Next case में object between C and F. Next case में at F. Then between F and P. ऐसे रखना. ठीक है? So 6 cases बनेंगे इसमें. So object between C and F. फिर से mirror, principal axis, mark pole, do shading, silver coat डाल दिया उसको. ठीक है? Then mark C and F. अब हमारा इमेज का हमारा ऑब्जेक्ट किधर है? At C. C पे बनाओ. ठीक है? तो एक रे तो पैरेलल. ये हर डायग्राम में कॉमन है. एक रे क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और रिफ्लेक्टेड रे कहां से आएगी? फोकस. दिस इज कॉमन इन ऑल रे डायग्राम. नाउ सेकंड, यू कैन टेक इट फ्रॉम फोकस. पैरेलल हो जाएगी या सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल. तो ये सेम एंगल बनेगा. You again? तो अभी ये एग्जैक्टली जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? उसके नीचे. So I'm telling you some manipulation tricks. So the image will be formed in the same. Same position at C. ठीक है? तो इमेज ऐसे बन जाएगा. और इसकी साइज भी सेम आएगी. Since I am not using scale, okay, but here you will get same size as object. This is F. ये क्या? Sorry, C. So my diagram may be different from the book diagram, but it is correct. If you choose the ray, let us say you chose ray going through focus, then also it will meet here. देखो, I am making the ray in a different color, so you are free to choose which one you want to choose. This also after reflection, parallel, at the same point. exactly at the same point. So either you choose a parallel and a ray passing through focus, or 4 different rays जो बताए थे वो सारे चूज करोगे तो भी इमेज वही बनेगी. So any 2 rays you can choose. समझ आ रहा है? चलो एक्सप्लेन करो इमेज फॉर्मेशन. बताओ इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या? हाँ, कौन सी रे कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? ऑब्जेक्ट किधर है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दिमाग अच्छा काम करेगा. हाँ, कौन सा रेस है? हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? सी पे. पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एट सी होना चाहिए.
ऑब्जेक्ट एट सी और यूज ऑब्जेक्ट एट सी। हाँ तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? सी पे। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ए बी। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। मेक अ करेक्शन, बाय मिस्टेक आई रोट ऑब्जेक्ट बिटवीन सी, इट इज एट सी। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन? वी नीड टू रेस, राइट? तो वो कौन सा रे है? एक पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होके एफ से आएगा। दूसरा वाला मैंने ले लिया ये रे इंसिडेंट अलोंग पोल, व्हाटएवर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वही रिफ्लेक्शन बनेगा नीचे। वो कहां से आएगा? यहाँ पे। So it is found that the rays are intersecting just below C, मतलब at C पे ही होता है, ठीक है? मतलब जितना C पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? C पे, ठीक है? तो इमेज पोजीशन इमेज एट C। बताओ उसका नेचर क्या है? नेचर जैसे यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड था, यहाँ पे क्या है? तुम बताओ। गुड क्वेश्चन। रुक जाओ लेट मी फिनिश इट। तो तुम लोग सुन नहीं रहे हो क्या? आई आस्क्ड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? हाँ रियल एंड इन्वर्टेड। तो मतलब तो सुन नहीं रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से? रियल का मतलब रियल क्यों है? व्हाई इट इज रियल? यू आर बोथ प्रेजेंट इन द लास्ट लेक्चर। तो लिखा था रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है? हाँ तुमने लिखा था लास्ट क्लास में। तो अगर नहीं लिखोगे तो कैसे? अगर तुम्हें रेफरेंस करना पड़ा तो कैसे लिखोगे? फिर कैसे देखोगे? मांग के देख लोगे हमेशा। हाँ एग्जाम से पहले तक यही करोगे तुम। ये नहीं करना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ सब चीज लिखो, सुनो ध्यान से, है ना? तो ये रियल बनेगा। क्यों रियल? क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, वो रियल इमेज फॉर्म होने का कंडीशन है, ठीक है? जब रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट करेगा तो रियल होएगा। तो क्या इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा ना। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज कैसा हो गया? उल्टा, ठीक है? तो रियल एंड इन्वर्टेड। बैठ जाओ। तो बच्चों सिर्फ यहाँ बैठ के प्रेजेंस फॉर्मेलिटी मत करो, मतलब समझो उसको, ठीक है? हाँ क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सबसे हाथ ऊपर कर रहा है। हाँ अच्छा आंसर के लिए ओके। हाँ What if the other ray is also parallel? Then also image will be formed at the same place, or will it be formed up? सेम प्लेस जहाँ पे दो रेज मिल रही हैं, चाहे एक 1000 रेज बनाओ, सारी वहीं से दो रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, वैसे ही सारी रेज करें, ठीक है? सर 3 रेज बनाना कंपल्सरी नहीं मैंने 4 रेज बताया तुमको, तो मैंने एक थर्ड रे ले लिया, फोर्थ रे बच गया। कौन सा था फोर्थ रे? एक विल रिफ्लेक्ट है। हाँ नहीं सी पे तो वो है ही, तो सी वाला रे नहीं ले सकते इस केस में, यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर सी से रे लिया होता तो ऐसे जाता और फिर वापस ऐसे आ जाता, तो भी वो यहीं से इंटरसेक्ट करता। है बात समझ? तो कैसे भी लो, मतलब दो मिनिमम दो चाहिए, दो के ऊपर कितने भी रे लोगे इमेज पोजीशन वही होगा फिक्स, ठीक है? सो इमेज एट सी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है? अभी सेम साइज होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। तो भी 3 डायग्राम है तुम्हारे पास 3 पोजीशन के लिए। इसमें क्या पैटर्न मिल रहा है? When the object is far away, image is at focus. When object come closer, image goes away from focus. ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, इमेज दूर जा रहा है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना? पहले डॉट था, अभी क्या हो गया? अभी डॉट से बड़ा हो गया, अभी इक्वल हो गया। नेक्स्ट केस में जब मैं ऑब्जेक्ट सी एंड एफ में रखूंगा तो क्या होना चाहिए? साइज तो अभी सी के बियॉन्ड होगा और मैग्नीफाइड होगा। ये पैटर्न है, ऑब्जेक्ट ऐसा हो रहा है, ये इमेज और ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसा जा रहा है, ऐसे ये ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। यस तो एक बार तुमने लॉजिक कैच कर लिया तो माइंड पे स्ट्रेस नहीं है, फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो गई।
ये चाहिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है इमेज कहाँ जा रहा है, फोकस से दूर जा रहा है और साइज बढ़ के जा रहा है, बस इतना ही आ रहा है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट केस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सब लोग अपने अपने नोटबुक में बनाओ, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। टास्क image object is between C and F. बनाओ, पहला रे क्या लोगे, पैरेलल, तो पहला तो बन जाएगा सर बियॉन्ड से लेवल करना सबसे बनना चाहिए ए, जो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पहले पैरेलल रे बनाओ मिरर पे, तो रिफ्लेक्टेड रे को फोकस से क्रॉस करो। हाँ एक मिनट, जिसने इसने बनाया मेरे को दिखाओ। टेबल करो ए बी, डायरेक्शन नहीं है तुम्हारा किसी भी इमेज लार्जर ही चाहिए। हाँ रब चलेगा, क्वेश्चन आएगा तो रे डायग्राम बनाने के लिए तो बनाएगा नहीं। कितने डायग्राम बना यस, इसको क्रॉस करो ऐसा, क्रॉस किया ना हर जगह, इंटरसेक्शन दिखना चाहिए ना, हमने वहीं पे छोड़ दिया। So image beyond C, real and inverted, image size enlarged. Very good. ठीक है, तो some of you have drawn already and most of you are getting it. So arrow लिखना object के लिए। सर enlarge होगा ना? Enlarged, yes. इधर arrow। ये dotted नहीं है, dotted है क्या? Diagram देखो तुम्हारे मुख में, dotted बनाएंगे image? नहीं सर। ये real image dotted नहीं होगा, real का solid नहीं है। ये ठीक है, ये भी enlarged है। और mirror का coating नहीं किया तुमने। Everything मतलब ये mirror coating का मतलब transparent है, ये रे कहाँ होगी? आगे निकल जाएगी। Everything has a feel। बना तुम्हारा diagram दिखाओ। एक मिनट दिखाओ। अच्छा तुम मुझे एक्सप्लेन कर, ये बिल्कुल तुम्हारा F किधर है? वो मैं मार्क करो, मार्क करके बताओ फिर। बहुत सुरमा बहुत करते हैं यार, कोई डायग्राम वगैरह हो ये सीखा मैं करूँगा। इधर तो फ्री हैंड कर लो, लॉजिक से चलो ना, उसमें सीख नहीं करना। नींद वगैरह एक्सप्लेन करो कैसे कैसे किया। ये पैरेलल कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहाँ से होना चाहिए, फोकस किधर है, फोकस। हाँ पैरेलल रे कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए, तुमने कहाँ से लेके गए फोकस और रिफ्लेक्ट, और ये दूसरी रे तुमने पोल पे ली होगी, ठीक है, अगर ये फोकस से जा रही होगी ना, ये इसको बराबर कट करता है, ये फिर से ड्रॉप
क्या केस है सर? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पैरेलल रे का ड्रॉ कर रहा हूं कैसे रे लिए तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ इमेज बिटवीन सी एंड नहीं object between C and F image should be beyond C not correct should be beyond C ना देखो first image was at F है ना कहाँ पे first case में at F first case में when rays were parallel so it was at F second case में F से आगे चला गया between C and F ठीक है third case में at C आया when the object was at C image was also at C the object is between C and F so image should be ahead no see देखो हमारा C और F ऐसा लेना है F की तरफ होना तो हमारा रिफ्लेक्टेड है F से क्यों नहीं है अरे parallel ray will be reflected through F no very clear and F see and F where will F lie this is C this length midpoint to where all these things you have to keep in mind ये तो नहीं आएगा correct so try to draw the when I am drawing you are finding it very simple but unless you draw it you will not discover what mistake you are doing everybody draw this way so which ray you have chosen one ray from pole and the other ray from focus logically yes but ideally क्या करना चाहिए एक parallel ले लो सबसे पहला रे मैंने क्या बताया था parallel एक ले लो बाद में कोई भी और एक करो तो रे डायग्राम अच्छा दिखता है ये करेक्ट है ठीक है लेकिन तुमने कुछ भी डायरेक्शन नहीं बनाया है तुमने ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट में एरो नीचे क्यों रखा है ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहता है एरो ऐसा दो साइड एरो नहीं मार करना एक ही साइड करना है बेस पे नहीं करना है फुट पे ठीक है तो देखो जब तुम और एक का भी डायरेक्शन नहीं है तुम्हारे इंसिडेंट का टुवर्ड्स मिरर रिफ्लेक्टेड का हो गया सब दिखाओ मेरे को डायग्राम बना के यस करेक्ट और ये लिखो देखो अब क्या लिखना है तुमको when the object is between C and F ये लिखा है इधर इमेज कहाँ बन रहा है beyond C इमेज beyond C ठीक है फिर इमेज का साइज क्या हो गया मैग्नीफाइड लार्ज या से मैग्नीफाइड और नेचर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड तो तुमको ये इंटरसेक्शन दिखाना है ये पॉइंट रहेगा तो इंटरसेक्शन दिखाना ठीक है उसको भी हेल्प करो जरा तुम रे कौन सा एक्सप्लेन किया तो बताओ और तुम्हारा ये यहीं पे क्यों रुकी है ये इंटरसेक्शन दिखना चाहिए ना यहाँ पे भी बेस का बनेगा ऑब्जेक्ट का ठीक है एक रे पैरेलल है डायरेक्शन नहीं बनाया रिफ्लेक्टेड का यहाँ से फिर तुमने ये एक सी की तरफ लिया है ये तुम्हारा सी का लाइन है ना ये नॉर्मल की तरफ अगर तुम्हारा रे गया तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नॉर्मल से जाएगा ये तो मैंने चूज ही नहीं किया इसी टॉप से तुमने एक पैरेलल लिया तो नॉर्मल ठीक है देखो इमेज बिटवीन इमेज कहां पे बियॉन्ड सी इमेज बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F लिखा जाता है definitely C and F The nature is real and imaginative. yes and size is और उनके The size will be enlarged size बड़ा दिखाना है so explain how you have made what rays you have chosen pen देखो so ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में एक रे तुमने पैरेलल ले लिया तो डायरेक्शन बताओ टुवर्ड्स तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आएगा फोकस से जाएगा
तो रे को आगे तक लेके जाओ, यही मतलब, ठीक है? ये रे कंप्लीट हो गया। सेकेंड रे तुमने काम में लिया अराउंड द नॉर्मल, मतलब सी से ये ऐसे नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल वाली रे वापस से वही पाथ से वापस आएगी, फिर यहाँ जाके एक साइड से जाएगी। ये क्या बना है यहाँ पे? ऐसे मैं वॉल्यूम से कॉपी कर दिया अगर, लेकिन अभी देखो कोई डायरेक्शन बताओ, ये काम था सी के अलाउ में नॉर्मल के, मतलब ये पॉइंट से सी पे जो भी जा रही है नॉर्मल है, एक ने तुमने अलाउ नॉर्मल लिया, डायरेक्शन बताओ, तो रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पर, तो अभी कहाँ बन रहा है? इमेज इज बियॉन्ड सी, सी के आगे चला गया, फिर रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है एंड making correct. और ऑब्जेक्ट का ऐसा कुछ नहीं, कहीं में भी रख सकते हैं, लेकिन तुम्हें रेस मतलब लिए फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में पैरेलल है, इसका भाव कैसे लिया तुमने? कहाँ है? नीचे वाला ये समझा ही नहीं तुम कर क्या? तो समझा ये पहला ये पैरेलल है ना, अलग डायग्राम वो जोड़ दे जाएगा, कट कर क्रॉस कर अलग। एक्सप्लेन व्हाट इज this is C and F, this will come from there. Okay. First way parallel to principal axis after reflection through the pole. How? What is the relation between incident and pole? Whatever is this angle, here is the angle of reflection. And draw arrow here, like you not draw arrow. Not draw arrow to the object and to the image. So now this arrow tells you that now the image is inverted, and this size when you compare this is enlarged. Got it? Now you will write. So you write down there is image beyond C. Beyond. Yeah, coming out. That size. Okay, and size is enlarged, which either enlarged or magnified. These magnified by totally greater. Bigger. Magnified is bigger. Yes, true. This time we did it. No, wrong. This is going from there should be parallel. Principal axis. Any ray incident parallel to principal axis goes through focus. You did the reverse. Focus and parallel. One second. Yes. What do you have to write? Diagram is correct. Right? Where is the relation? Very good. Why have you taken 3 rays? Object between C and F. Object between C and F. Image also C and F. Object between C and F. So image is beyond C. Got it? That is why you get it when you write. Yes. Everything is correct. Just image position.
What is this ratio? What is between object? Images not seen. केवल एक केस में बनता है when object is seen. I understood what ऐसे ही किया है जैसे आया एक ऐसे चार पांच सी का इधर सी इधर सी का ये सी So anybody has any question? Huh? Please show your. Explain. ठीक है एक मिनट where is the object? AB is the object. Object पे कहाँ से निकलता है उसका? कैसे? F से हो। कहाँ पे है? वापस वहीं से क्यों आया? कब उसी लाइन से वापस जाएगा जब नॉर्मल फ्लो इसको थोड़ा सुना क्यों? So I'll meet after the break and I'll take it up after the break. So we'll see you after the break.
चल बाकी बच्चे को पानी यार ताली है यार इन लोगों ने even add नहीं यार कौन है अबे शेख अली खान की बेटी सर सारा अली खान उसी की बेटी वही तो सारा अली खान मेरे फॉलो करो मेरे को भी करना जाने दे उसको साइड हो ना अभी की अरे तो जाना है उधर तो कुछ दो अरे तू चुप रहो ना चुप स्वाम हटना अभी तू मेरे को फॉलो करना पिछले बार मैंने गए थे ना तभी भी जब बचपन से मुझे तो जो चाइल्डहुड प्रॉपर रेस्टोरेंट जो फैमिली